चलो, so I think my audible to everyone. 7 hours ago, and yesterday हमने लिया था what are the problems on current electricity. So today we'll continue with the same one. So yesterday हमने जो problems लिए थे, that problems are from fraction bank provided by the HSC board. उसमें से problem लिए थे. There are 6 problem जो हमने लिए थे under VSA, SA, SA 1 and 2 SA लिया. So today we'll conduct the problems of test book. So test book में exercise में जितने problems दिए थे, we'll complete that problems. Okay, we'll go from easy problem, moderate problem, and then for the tough problem. So there are 10 problems that we'll conduct. Then we'll go through it. Okay, sure. So let's start with the one by one. So let's see the first problem. See, उन्होंने क्या बोला? A voltmeter has a resistance of 100 ohm, and what will be its reading when it is connected across a cell of EMF of 2 volt, and internal resistance is 20 ohm. So यहाँ पे given क्या दिया? एक voltmeter जिसका खुद का resistance कितना है? 100 ohm, and उसको किसके across लगाए? 1 EMF. EMF का voltage कितना है? 2 volt, and resistance कितना है? 20. So we need to count voltage across that EMF by using voltmeter. So what are the given point? So यहाँ पे given क्या है? So given is R, that is 100 ohm, that is the first given. उसके बाद EMF, that is second given, 2 volt, and छोटा r, that is a 20 ohm. ठीक है? Let's what we need to find. We need to find the voltage. To find क्या यहाँ पे? That is voltage. Let's start with the solution. The solution में क्या लिखना है? We need to find the voltage. So we'll use the basic law, Ohm's law. So V is equal to IR, that is Ohm's law. Now we need to find V. So for finding the V, what we require? Current I and resistor R. Resistor R का value पता है, that is 100, but we don't know what is the current. But there is one more formula. I is equal to E upon R plus R, capital R and small r, by using EMF. So अगर ये दोनों फॉर्मूला मैंने क्लब किया, if I club both the formulas, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे जो I just replace by this one. Yesterday हमने same sum किया था, same values नहीं थे, लेकिन same type था. So if I put the values, 2 divided by 100 plus 20 into 100. So it's a 2 by 120 into 100. If I cross it, if I cross किया कुछ, so it is become 20 के table में to become 5, it will become 6. So it's 1 by 3, and the 5 by 3 is 1.666 voltage. It's a continuation of 6. The final answer is 1.66. Sometimes you can write 1.67 approximately का, तो 1.67. ठीक है? Just check there. Move further. Simple sum का. It will be for 1 mark or 2 mark. Simple sum. ठीक है? Just go through it. So कुछ भी doubt होगा, you can ask me. Use the chat box and just give it. Sure. So I think there is a more solution. ठीक है? Let's see the next one. Let's see one more problem. Same problem, 6 values are different. Okay? See, अभी यहाँ पे क्या दिया? The voltmeter has a resistance of 30 ohm. What will be the reading when it is connected across a cell of 2 volt, and internal resistance कितना है? 10. Same type का sum, only value are different. What is the given यहाँ पे? So capital R is how much? 30 ohm. Voltage is how much? 2 volt. It's not a voltage, it's an EMF. यहाँ पे EMF दिया ना, it's an EMF. Again 2 volt, and internal resistance कितना है? 10. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? Again voltage. What will be the reading? So किसका reading चाहिए? Voltmeter का. So voltmeter give the voltage. So let's start with the solution. Again we'll use the same formula जो last time किया. V is equal to IR and I is equal to E upon R plus R. ठीक है? Same formula use.
सो अगर मैंने सेम फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, V इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R प्लस R इंटू R, just put the value 2 divided by 30 plus 10 into 30. So it's a 2 divided by 40 into 30. Okay? So this will become 3, this will become 4. I'll use a different color. Simple sum है जो अभी क्या है उसमें से इसे 3, 4, 2 ones are 2, 2 twos are 3. This is 3 by 2 and that is equal to 1.5. So what is the voltage across that cell including the internal resistance? See, EMF कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट. यहाँ पे 1.5 क्यों है? Because of the internal resistance. ये 2 में से कुछ वैल्यू यहाँ पे जाएगा, कितना जाएगा? 0.5. So that's why यहाँ पे 1.5 आया. Because this is a reading including the EMF and internal resistance. इन दोनों का मिला के रीडिंग है by using voltmeter. ठीक है? So this is the answer. दोनों क्वेश्चन सिंपल थे. तो हमने सेम टाइप का सम इन दी यस्टरडेज लेक्चर जो क्वेश्चन बैंक था बोर्ड का उसमें से लिया था. एंड देयर आर 2 क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. तो ये अनसॉल्व्ड है एक्सरसाइज में. बोथ आर वेरी इजी. इट विल फॉर द 1 मार्क, 1 or 2 मार्क. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है? आई थिंक देयर इज नो डाउट इन द गिवन सम. सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. सिंपल से हार्ड लेंगे. ओके, सिंपल देन मॉडरेट एंड देन हार्ड, ऐसे सीक्वेंस में लेंगे. सो लेट्स टेक नेक्स्ट टाइप ऑफ सम. एक और एक सम लेते हैं. सिंपल वाला फर्स्ट लेते हैं. ये हार्ड है थोड़ा सा. विल टेक अ सिंपल फर्स्ट. सीरियस वन. इट्स लुक वेरी बिगर इफ यू गो थ्रू द सेंटेंस. सेंटेंस पढ़ने के बाद इट लुक्स बहुत बड़ा सम, लेकिन एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल. इफ यू नो द कांसेप्ट, इसमें कुछ भी नहीं. क्या दिया इसमें? a set of 3 coils having the resistance of 10, 12 and 50. मेरे पास 3 कॉइल है एंड तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? 10 ohm, 12 ohm, 50 ohm respectively, and they are connected in parallel. तीनों कनेक्टेड कैसे? पैरेलल. The combination is connected in series with the series combination 3 coil of the same resistance. मतलब पहले ये तीनों कॉइल पैरेलल में कनेक्टेड थे, अगेन उसके बाद सेम कॉइल सीरीज में कनेक्टेड. ये पूरे कॉम्बिनेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट. बैटरी कितना है? 4.1. फर्स्ट आई ड्रॉ द डायग्राम, देन यू लेट इट क्लियर इट. सी, सो दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस. और वी कैन सी रेजिस्टर आल्सो. फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड थ्रू द बैटरी. सबको डायग्राम निकालना है, याद रखो इन एग्जाम. तो ये वैल्यू कितना है? 10 ohm. दिस वैल्यू इज 12 ohm. दिस इज 15 ohm. अगेन 10 ohm, 12 ohm, 15 ohm. एंड वोल्टेज कितना है? दिस इज 4.1. तो मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना मतलब क्या? दिस 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसका मुझे पहले पैरेलल फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द पैरेलल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? इसका जो आंसर आएगा इट विल बिकम सीरीज विद दिस वन. तो 10, 12 एंड 15 इन तीनों का अगर मैंने पैरेलल फाइंड आउट किया, दैट पैरेलल आंसर एंड ये तीनों का सीरीज, ये सब ऐड करने के बाद विल गेट अ टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है? तो दिस इज जस्ट योर बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है इन एग्जाम. ठीक है? तो फर्स्ट आई विल फाइंड द पैरेलल ऑफ दिस वन. इसका मैं पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड करता हूं बाय यूजिंग व्हिच फार्मूला? 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बाय यूजिंग दिस वन. ठीक है? Sure. So I'll erase this diagram. Then we get a clear idea. तो मैं डायग्राम नहीं erase करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा erase करता हूँ. ठीक है? So ऊपर थोड़ा सॉल्व करता हूँ. चलो. So मुझे क्या चाहिए? 1/RT और RT नहीं, just 1/R. Because it's not a total resistance ना. टोटल तो बाकी it's a 1/10 plus 1/12 plus 1/50. Now बेस सिम करना है. तीनों में क्या बेस सिम होगा? 10 के टेबल 10, 12 and 50. तो 10, 6, 12, 5 and 15, 4, 60. सो अगर हमने बेस सेम किया 60 का, तो देखो यहाँ पे 60 के लिए 6 चाहिए, 60 के लिए 5 चाहिए एंड 60 के लिए 4 चाहिए. सिंपल है. देन बेस इज सेम. तो 6 + 5 + 4. So what is answer? 6 and 5, 11 and it's a 15. So it's a 1/4. लेकिन ये किसका आंसर है? ये 1/R का है. What we require? We require R. And what is R? इसका रिवर्स. अगर R ऊपर गया तो this will
this 4 will go up, so this is R. लेकिन किसका आंसर है? दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तीनों का मिला के द आंसर इज 4, इन तीनों का मिला के आंसर इज 4, ठीक है। नाउ दिस 4 ओम एंड ये तीनों, इन तीनों क्या होगा? एडिशन। तो नीचे मैं सॉल्व करता हूं, सो गेट अ टोटल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? नाउ वी कैन राइट RT, that is total resistance, that is 4 plus 10 plus 12 plus 15. So addition करो 10 10 10 30 34 36 41. So what is the total resistance? 41. Now total resistance भी मिल गया, now we will find the total current. सिस्टम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो काउंट करते हैं, सिंपल है। V is equal to IR. So what is I? I is V upon R. V कितना है? 4.1 और ये कितना है? 41. So what is the answer? 44.1 divided by 41. ठीक है, चलो मैं इरेज करता हूँ, I will write again. So V is equal to IR, I is equal to V by R. V कितना है? 4.1 और ये कितना है? 41. So I can write 41 as 41 into 10 raised to minus 1 divided by 41. So 41 41 cancel हुआ, answer is 0.1 ampere. So this is the total current from the circuit. तो सर्किट में से कितना, how much current is flowing? It's 0.1. Simple now. So anyone in doubt? Sure. So these are the simple sum. यहाँ पे पहले मैंने पैरेलल का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया एंड दैट आंसर विल बी इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर. सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो उसके बाद और थोड़ा मॉडल करते हैं, इजी क्वेश्चन हो गए और एक दो इजी फॉर द नेक्स्ट वन. So let's see the next one. So if you have any doubt, you can use the chat box. Okay. तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये बाद में लेते हैं ये डायग्राम. इट्स पूरा डिफिकल्ट है बिकॉज सो मैंने स्टोरी ये छोड़ देंगे, लेकिन ये छोड़ने के लायक नहीं. इट्स लुक डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा स्टेप फॉलो किया यू गेट आंसर. दिस वन इज इजियर. तो सबसे पहले क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं, गिवन फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड आउट करते हैं, देन वी गो फॉर द आंसर. A potential drop per unit length of along a wire is 5 into 10 raised to minus 3. This is 10 raised to minus 3. Okay. ऐसे. So voltage और potential drop per unit length मतलब क्या दिया ये? Potential gradient. Okay. मतलब K दिया है. So what is K? 5 into 10 raised to minus 3 voltage by meter or volt by meter. तो K दिया है. If the EMF of the cell balance against the length 216 सेंटीमीटर. सो मुझे लेंथ भी दिया है, हाउ मच? 216 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में सर कन्वर्ट करो मीटर में. सो सेंटीमीटर इज हाउ मच? 216 into 10 raised to minus 2 मीटर. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2.16. ठीक है, एंड देन फाइंड द ईएमएफ. तो मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड इट्स अ ईएमएफ. Sure. Let's find the solution. Now what is the potential gradient? It's a voltage upon length. यहाँ पे voltage क्या फॉर्म में दिया? EMF. ठीक है, so it's E by L. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है E. इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करते, so it's a K into L. So K is a capital, K into L. So what is a K? 5 into 10 raised to minus 3. What is L? ये यूज करता हूँ मैं, this one 216 into 10 raised to minus 2. जब मैंने 216 into 5 किया, ठीक है, 216 into 5 तो आंसर इज 1080. उसके बाद 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 2. See, a raised to m into a raised to n. आंसर क्या आता है? a raised to m plus n. दोनों का बेस सेम है तो ऊपर एडिशन होगा. यहाँ पे 10 and 10 बोथ आर सेम, ऊपर वाले का क्या होगा? एडिशन. -3 plus -2, आंसर इज -5. तो इसको और थोड़ा सा मैंने अच्छे से सॉल्व किया by adjusting the point. तो मैंने अगर पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ पे -5 मेरे पास 4 डिजिट, मतलब 4 8 0 8 0.01080. दिस इज योर वैल्यू ऑफ EMF. चेक करो, सिंपल है. एक ही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट. कुछ भी डाउट अगर पूछो.
So anyone in doubt? Okay. Chalo, we'll move further. Just give me 1 minute. चलो, let's see the next one. तो सिंपल था, उसमें एक ही फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने बस. So let's see the next one. ये भी इजी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा यूज करें. क्वेश्चन सिंपल है. So we'll start with the given. कलर चेंज करता हूँ. Given. A potentiometer wire has a length of 1.5 meter. उसका लेंथ कितना है? That is 1.5. ठीक है. The resistance is 10 ohm. ठीक है. Is connected in series with the CL of EMF 4. तो EMF कितना दिया? 4. ठीक है. And internal resistance is 5 ohm. ठीक है. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. Potential drop per centimeter of the wire. मतलब क्या पूछा उन्होंने? इनडायरेक्टली उन्होंने पोटेंशियल ग्रेडियंट ही पूछा है. के पूछा उन लोगों ने, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी दिया है, इट इज 10 ओम. ठीक है, ये 10 भी दिया. देन वी नीड टू फाइंड दिस के. चलो अभी थोड़ा सा सोचते हैं हाउ टू सॉल्व. देयर आर सम फॉर्मूलास. K is equal to V by L, because यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है. इन प्रीवियस सम देयर इज नो कॉल्ड रेजिस्टेंस, वहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ मेंशन नहीं किया था. यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी. सो इट विल बिकम V, नॉट EMF. सो K is equal to V by L. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. लेकिन मुझे V पता है क्या? नहीं, लेंथ पता है, बट आई डोंट नो व्हाट इज V. देयर इज वन मोर फॉर्मूला, V is equal to IR. मैंने देखा था. यस, देयर इज वन मोर फॉर्मूला, बिकॉज़ I पता नहीं, आई नो R. I is equal to E upon R plus R. So ये तीनों फॉर्मूला मिला के we need to find the one. Let's see. अगर मैंने ये I का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया तो चलेगा, and then ये V का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया तो चलेगा. So what is the final formula? K is equal to this R as it is R. So I यहाँ पे शिफ्ट किया तो नीचे क्या आएगा? R plus R. यहाँ पे क्या आएगा? This V get converted into E into R. So this is a new formula. So कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? This one. K is equal to ER divided by L R plus R. Just put the values. यहाँ पे वैल्यू क्या है? E का? E is 4, R is 10, L is 1.5, मतलब 15 into 10 raised to minus 1. And what is R plus R? 10 plus 5, that is 15. तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ डाउट आना ही चाहिए. ठीक है, एनीवन इन डाउट? श्योर. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस विल बिकम 40. ये ऊपर गया तो क्या होगा? इट विल बिकम 10. दिस वन, एंड 15 into 15 इट्स 625. I think this is wrong. 15 into 15 it's 225. 625 225. This will become 400 into 225. So अगर आप अपने log table से solve किया, use a log only because this will give the perfect answer. तो अगर अपने log table से start solve किया, what is your answer? Anyone any idea? Just use a log table. किसी ने solve किया होगा, then you will get the answer as. So let's do the 400 divided by 225. Just do it. तो जो कुछ भी आंसर आएगा, that is not a final answer. एक स्टेप बाकी है. So the answer is 1.778. The answer is 1.778. क्या? 1.77. This is the answer of voltage by meter. K तो मिल गया 1.778, लेकिन किसका आंसर है? This is a voltage per meter. लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? Potential drop per centimeter. Potential drop per centimeter. ठीक है, तो देखते यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? चेक करो, सिंपल स्टेप. सो नेक्स्ट टाइम यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला हमको दिखाना है कि यूज दिस फॉर्मूला. ये तीनों फॉर्मूला मिला के दिस फॉर्मूला डिजाइन किया. सो द आंसर इज 1.778 वोल्टेज पर मीटर.
लेकिन ये मीटर में वोल्टेज पर वी रिक्वायर सेंटीमीटर. लेट्स सी. So what is the answer? K is equal to 1.778 वोल्टेज पर मीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. Now what is a meter? 1 meter is equal to 100 centimeter. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर. 1.778 divided by 100 मतलब क्या होगा? It will become 0.001778 volt per centimeter. So this is your value of K. I think it's wrong. Just wait. Wrong thing. Just wait. If I divide 1.778 divided by 100, डबल जीरो नहीं, सिंगल जीरो, बिकॉज एक यहाँ पे 1 है ना. 0.01778 वोल्ट पर सेंटीमीटर. 2 पॉइंट शिफ्ट किया, एक को अंदर डाला, जिनका 1 मोर पॉइंट, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 बस. सो दिस इज फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन रीड करते टाइम चेकआउट उन्होंने क्या पूछा, सेंटीमीटर पूछा कि मीटर पूछा. सो व्हेनेवर दे आस्क इन मीटर, तो दिस इज योर फाइनल आंसर. इन सेंटीमीटर में पूछा तो 100 कैसे डिवाइड कर. ठीक है, सिंपल है. जस्ट गो थ्रू. Sure, let's see the next one. So if possible, I'll try to complete the easier first. Okay, कुछ टेंशन नहीं है. उसके बाद we'll see the moderate and hard. This one is same. ये भी सेम है as it is, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फाइन डिफरेंट करें. So let's write the given first. A resistance of potentiometer wire is 8. So resistor कितना दिया है? 8. Length is 8 मीटर. ठीक है. Resistance box and 2 volt battery. मतलब EMF कितने का है? 2 volt. Connected in series with it. ठीक है. What should be the resistance in the box if it's desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter? तो हमने yesterday solve किया था हिंदी. Question में I think mostly same ही वैसे ही देखते फिर. 1 microvolt per millimeter. साइड में लिखते हैं. So K is equal to 1 microvolt per millimeter. See micro मतलब क्या होगा? It will become 10 raised to minus 6. And millimeter मतलब 10 raised to minus 3. तो अगर मैंने 10 raised to minus 3 ऊपर शिफ्ट किया तो क्या होगा? 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 3 positive. What is the final answer? 10 raised to minus 3 volt. So what is the new value of K? 10 raised to minus 3 volt per meter. ठीक है. And मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है रेजिस्टर. एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर सिस्टम में ऐड हुआ बाय यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? Re. देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस हियर, लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर रेजिस्टेंस बॉक्स ने ऐड किया. मुझे Re फाइंड करना है. तो आई यूज द सेम फार्मूला. कौन सा फार्मूला? इसके पहले किया ना हम लोगों ने. व्हिच वन? K is equal to E R divided by L. R प्लस यहाँ पे छोटा r था ना, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस. लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है क्या? नहीं. There is a resistance box का external resistance, so I can write here Re. ठीक है. So small r is replaced by Re because यहाँ पे small r दिया है क्या? उन्होंने मेंशन ही नहीं किया. That will be, it will be a null, it will be negligible. So we'll use same formula. ठीक है. ये same formula यूज करते हैं, सॉल्व करो. ठीक है. यहाँ पे क्या चाहिए? We require this r. This one है, ये छोटा r, ये Re पे चाहिए. So what we require? Re. तो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. Let's see. So formula क्या था? K is equal to E R L R plus Re. What I required? I required R plus Re. तो उसको LHS में लेके जाओ. So what is RHS? E R divided by L. चलो. So let's put the formulas. E is how much? 2. R is how much? R is 8. Length कितना? 8. So 8 and 8 get cancelled. Answer is 2. K भी बाकी, sorry. This K is remaining. यहाँ पे K बाकी है. This K. So K is how much? 10 raised to minus 3.
ठीक है, फिर से सॉल्व करता हूँ। So while putting the values, do not do any mistake. जैसे मेरे से हुआ, do not do any mistake because that much practice you require. So this is 2, this is 8, this is 10 raised to minus 3, this one is 8. 8 and 8 get cancelled. 10 raised to minus 3 ऊपर जाएगा. So it is 2 into 10 raised to 3. मतलब R plus RE. इसका आंसर क्या आएगा? It's a 2000. What I required? मुझे चाहिए RE. So what is RE? It's a 2000 minus R. So 2000 minus RE कितना है? 8. ठीक है, सो आंसर कितना है? 1992. बस. तो फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स कितना रेजिस्टर चाहिए? 199. खत्म. दिस सम विल बी फॉर द 2 marks. अगेन इट विल बी फॉर 2 marks. ठीक है, सो एनी डाउट? एनीवन? जस्ट गो थ्रू. सिंपल. एनीवन इन डाउट? सिंपल है ना? चलो, so let's see the next one. चलो, ये भी सिंपल था लेकिन प्रैक्टिस करो. ओके, सिर्फ देखो मत, एटलीस्ट यूज अ पेन एंड पेपर एंड सॉल्व इट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ये भी सिंपल ही देखने को. इट्स टू लॉन्गर, टू बिगर बिकॉज़ 4-5 लाइन का सेंटेंस है. when two cells of EMF E1 and E2 are connected in series, मतलब ये E1 E2 वाला सम है, that is potentiometer के application, sum and the difference one. So when two cells of E1 E2 are connected in series to assist each other, the balancing length of potentiometer is 2.7. ठीक है, when this are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is 0.3. Compare the EMF of two cells. देखो सिंपल है, यहाँ पे गिवन क्या दिया है? फर्स्ट लेंथ इज हाउ मच? 2.7 मीटर. सेकंड लेंथ इज हाउ मच? 0.3 मीटर. मुझे क्या फाइंड करना है? दैट इज सेल इज कनेक्टेड स्विच. क्या होगा? कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कंपैरिजन ऑफ E1 and E2. E1 E2 नहीं फाइंड करना, उनका कंपैरिजन मतलब रेशियो. सो मुझे फाइंड आउट करना है E1 by E2. सो इफ यू गो टू द पोटेंशियोमीटर का आंसर, तीन डेरिवेशन. You get a formula. What is the formula? Simple वाला है, E1 upon E2. So in the numerator इन दोनों का एडिशन होगा, ये डिनोमिनेटर इनका सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, so just go through the your टेक्स्ट बुक, उसमें ये फॉर्मूला दिया है for the two EMFs. So what is L1? 2.7 plus 0.3. 2.7 minus 0.3. So it's a 3.0. It's a 2.4. So if I use a table of 3, so okay, it's let's make it simpler. यहाँ पे 30 करते, यहाँ पे 24 करते. Point adjust किया. If I use a table of 3, it will become 10. This will become 8. If I use a table of 2, it will become 5. It will become 4. So 5 by 4. 5 by 4. Anyone? कितना आता है 5 by 4? Simple है. 1.25. 4 ones are 4. It's remaining again 10. 4 2 side. Remaining 2. And it's a 5. 4 5 are 20. So it's a 1.25. You can get 5 by 4 also. It's also correct. You can get 1.25 also. And there is a no unit. यहाँ पे unit नहीं होगा because it's a comparison. It's a ratio. So do not use a unit. Unit use मत करो. Because E1 and E2 दोनों का unit same है तो cancel होगा. It's a factor. It's a ratio. It's a comparison. So you can go for 5 by 4 or you can go for 1.25. So both are correct. Okay, just go through this one. Simple. So anyone in doubt? Sure. Sure. Let's see the next one.
दिस वन आल्सो सिंपल. सी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला यूज करना है पोटेंशियोमीटर. ओके, लेट्स सी. The EMF of a cell is balanced by the length of 120 centimeter of potentiometer wire. ठीक है, so length कितना दिया है? That is 120 centimeter. ठीक है, आगे देखते हैं. When the cell is shunted by the resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced to 20 centimeter. Reduced by 20 centimeter. ठीक है, then the internal resistance of the cell क्या है? See, internal resistance का यूज करना है फॉर्मूला. So given यहाँ पे दो लेंथ दिया था. First length is 120 centimeter. सेकेंड लेंथ उन्होंने बोला है कि रिड्यूस हुआ है 20 सेंटीमीटर से. ओके, सो क्या आएगा? L2 L1 से 20 सेंटीमीटर रिड्यूस हुआ, मतलब 120 minus 20, so it will become 100 सेंटीमीटर. तो L1 is 120 सेंटीमीटर, L2 is 100 सेंटीमीटर. और क्या दिया? रेजिस्टेंस इज 10 ओम. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड इज छोटा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. सो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन. So formula क्या है? Anyone? Small r is equal to capital R or L2 upon L1 minus 1. Sorry, L1 upon L2, not L2 upon L1 upon L2 minus 1. So if you want to find small r, it's a capital R, L1 upon L2 minus 1. Let's see. If I put the value 10 into, so it's a 120 divided by 100 minus 1. So 120 divided by 100, मतलब you can use a 2 का टेबल. First is 0 0 cancel होगा, एकदम छोटा लेवल पे गए तो. So this will become, if I use a 6 का टेबल, नहीं 6 पे, it will, you can use 2 only. It will become 6 and 5. So 10 into 6 by 5 minus 1. So make a base same. तो अगर मैंने यहाँ पे base same किया, तो it will become 10 into 6 minus 5 and 5. So 10 into 1 by 5, and that is 2. So what is the value of R? It's a 2. See, मैंने आपके लेवल पे जाके सॉल्व किया, तो इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल है. ठीक है, so it's a 6 minus 5. Now some students will यहाँ पे बेस सेम करेंगे, 120 and 100 का बेस सेम करेंगे, that is 120 minus 100 divided by 10. ऐसे भी चलेगा. So 20 by 100 1 by 5. It's up to you. At the end, what do they require? Just a final answer. Either you can go for the log table, you can go for the simple calculation. It's up to you. So internal resistance how much? That is 2. So any doubt? Anyone? Simple. Now उसके बाद we go for the थोड़ा moderate and hard side. अब तक जितने लेके थोड़े simple है. It's based on formula. If you know the formula, if you know what to given क्या दिया, क्या find out कर, तो हो गया. इसमें कुछ नहीं. Let's go for the. There are 3 sums which are very difficult. तो एक एक स्टार्ट कर. ये डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है. लेट्स स्टार्ट दिस. एक सम पता चल गया, यू विल गेट अ फर्दर अंडरस्टैंड. ठीक है, a battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of 1 volt and internal resistance 1. ठीक है, with their like poles are connected together. मतलब like poles are connected together. Positive positive are connected and negative negative connected. This is known as the like poles. The combination is used to send the current to an external resistor of 2 or a resistor. Calculate the current to the external resistor. See, let's draw the diagram first. यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. So this is the first battery, उसका resistance. This is the second battery, उसका resistance. Then I will draw the external resistance. एक और resistor उन्होंने connect किया सर. तो इसका वैल्यू कितना है? First EMF and first resistor, that is the 4 volt 1 ohm. Second वाला का 1 volt and how many resistor? 1 ohm. I think both are 1 ohm. And नीचे वाला कितना है? 2. So this is E1 and R1. So let's take यहाँ से I1 is current flow, यहाँ से I2 is current flow, यहाँ से दोनों का कॉम्बिनेशन, that is I1 plus I2. यहाँ पे भी दोनों का कॉम्बिनेशन I1 plus I2.
तो मेरे पास कितने लूप्स है? मेरे पास 2 लूप है, दैट इज फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ठीक है, मेरे पास 2 लूप है। सो लेट्स गिव द नेम, वी गिव द नेम, यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज ए बिकॉज़ नेम इज रिक्वायर्ड। तो यहां से अगर स्टार्ट किया ए, सो दिस विल बिकम बी, दिस विल बिकम सी, ये होगा डी, ये होगा ई, ये होगा एफ। ऊपर जाओ ना तो नीचे आओ, लेट्स टेक जी एच, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे दीज आर द, मुझे दोनों लोग फॉलो करें, दोनों का इक्वेशन लिखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो we'll use apply KVL. Okay, so I guess the ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ काम का नहीं है, बस डायग्राम में ड्रॉ किया। Write the first stating that apply KVL to the first loop. So we can write apply KVL to first loop. This one इसको लिखते हैं A B C D E F G H again. So क्या से कहा था? A B C D E F, F के बाद नीचे G H and again. Okay, so अगर मैंने KVL यहाँ पे लगाया, so let's go for this one. You should know how to use a KVL. तो अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, फर्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा? दिस वन इज ट्रू। सी डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन बोथ आर सेम, मतलब क्या लेना है? नेगेटिव। सी करंट डायरेक्शन कैसा है? I1 and I2 यहाँ से, अगर डायरेक्शन उससे सी, सो क्या आएगा? -2 I1 plus I2, क्या आएगा? -2 I1 plus I2। I'll go ऊपर नीचे, नाउ द वन मोर, I2 का डायरेक्शन और अपना डायरेक्शन सेम है, सो अगेन -1 I2, why I2? Because 1 ohm से कितना जा रहा है? Only I2, and then battery. So battery के लिए what we take second sign, first sign is a positive, second is first sign is negative, second is positive, so +1, that is equal to 0. अगर मैंने इसको ओपन किया तो क्या आएगा? -2 I1 -2 I2 -I2 +1 is equal to 0. ठीक है, so -2 I1 इन दोनों का एडिशन, -3 I2 -1, और सब जगह पे मैंने माइनस माइनस कैंसिल किया, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? 2I1 plus 3I2 is equal to 1. So this is your first equation. ठीक है, so anyone in doubt? check करो। So what is the equation? 2I1 plus 3I2 just wait. So 2I1 3I2 is equal to 1. Okay, so मैं ये लूप फॉलो किया, देन उसके बाद सेकंड लूप लेना है, यू नीड टू फाइंड द सेकंड लूप। तो सेकंड लूप मतलब ये वाला बीच वाला पार्ट, इसको लेना पड़ेगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन देखना है, उसके बाद देखते हैं। So, एक बार आपको एक सम पता चल गया ना, उसके बाद ये दो सम यू कैन इजीली सॉल्व, सिर्फ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन है साइड में लिखता हूं, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ सेम इक्वेशन। सो 2I1 plus 3I2 is equal to 1, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। Now I'll use a second rule. So apply this one, okay? F2G, then H, then A, then K, then I, then F, khatam. So apply KVL to F, G, H, A, K, I, again F. ठीक है, नीचे से आएंगे। Now this is the first one, so again -1 I2, -2 plus, so again +1, ऊपर जाएंगे तो सीधा डायरेक्शन I1 कैसे जा रहा है? दिस साइड, अपना डायरेक्शन क्या है? दिस साइड, सो अपोजिट, सो यहाँ पे प्लस है एंड माइनस, सो इट्स -4।
So I1 is opposite to our direction, so we can take plus. So it's a 1 I, and this is equal to 0. So what is the equation? So equation is minus I2. This will become minus 3 plus I1 is equal to 0. तो यहाँ से कुछ तो फाइंड आउट करते हैं. लेट्स टेक दी I2. सो यहाँ से I2 क्या आएगा? सो I2 इज I1 minus 3. This is your second equation. मैंने I2 उस साइड शिफ्ट किया, so I2 is how much? I1 minus 3. And then we'll substitute this I2 here. अगर मैंने यहाँ पे I2 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे I1 का वैल्यू मिलेगा. सिंपल क्वेश्चन. दो इक्वेशन मिल गए. So I'll erase all the things and then we'll substitute. So let me write the two equation once again. So what is the first equation? It is 2I1 plus 3I2 is equal to 1. This is your first equation. Now what is second equation? I2 is equal to I1 minus 3. This is your second equation. Okay? So what we'll do, we'll put the second equation in the first one. So if I put second in first, so what will happen? Let's see. 2I1 as it is, 3. What is I2? I1 minus 3. And this is equal to 1. So if I open is this one, 2I1 plus 3I1 minus 9 is equal to 1. So क्या आएगा? 5I1, 9 plus 1, that is 10. So what is I1? 10 by 5, that is equal to 2 ampere. तो मुझे I1 का वैल्यू मिल गया. I1 is how much? 2 ampere. चेक करो. So I1 is 2 ampere. उसके बाद if I1 is 2 ampere, then what is I2? I2 is I1 minus 3. So it's a 2 minus 3, and that is minus 1 ampere. Current का आंसर नेगेटिव है तो भी चलेगा. There is no change in the answer. Direction change होगा. The magnitude remains same. So what is I1? I1 is 2 ampere. And I2 कितना? That is minus 1. खत्म. Simple था. See, दो इक्वेशन आना चाहिए आपको to find the two equation. बस वाले कुछ नहीं. Okay? So anyone in doubt? Check करो. ठीक है? Let's go through. Sure. Anyone in doubt? So you can solve the same sums. Okay, these two are for your side. Now I'll give these two sums for your side. You can solve this sum. कौन सा है? This one. कौन सा? This one. Same sum है. सिर्फ यहाँ पे वैल्यू क्या दिया डिफरेंट. EMF 1, EMF 2, register 1, register 2, and external resistor. मतलब same. You can draw the same value. You can draw the same value. And then यहाँ पे से वैल्यू डिफरेंट है. 1.5, 2, 1, 2, and 5. बस. ठीक है? तो सेम फॉलो करो and you will get the answer. So I1 का यहाँ पे आंसर क्या है? I2 का आंसर क्या है? So I1 is how much? It's 1 by 34. And I2 is how much? It's 10 by 34. These are the two answers. I1 and I2. 1 by 34, 10 by 34. Okay? Sure. Let's go through it. We can solve this one as a homework. And then we'll stop. So anyone in doubt? Kuch bhi doubt hai? Okay. These are the sums that we completed from the current electricity. Okay. Sure. So we'll stop here. Chalo bye.